हेलो ऑल द डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इन वाइट। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूट एंड एसजीएलटी। सो एवरीवन नोज दैट इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक एंड अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। इट में से एक दो क्वेश्चन तो लाइक हर पेपर में आता है, वेदर इट इज़ INI सेट, NEET, PG, FMG और UPSC CMS, हर में। सो आई विल बी टेकिंग ओनली योर 5 मिनट्स। मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. So we will be starting with GLUT1. As we all know that GLUT1 is widely spread. It is present almost everywhere in our body, as it is mainly present in like RBC and brain. And it has glucose uptake in most of the cell like RBC, brain, retina, placenta. And if we talk about the GLUT2, it is mainly present on the beta cell of the pancreas. So इसमें क्या होता है कि low affinity होता है, glucose is uptaken in the liver and in the beta cell. And if we talk about the GLUT3, it is present in the brain. So हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि अगर GLUT1 ब्रेन में भी है और GLUT3 भी मेन में है, तो जब क्वेश्चन है कि ब्रेन में मोस्ट कॉमन प्रेजेंट क्या है, सो देन वी विल आंसर GLUT3 ओवर GLUT1. वैसे तो एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में देगा नहीं, अगर वो ऑप्शन में देता है तो then we have to choose GLUT3 over GLUT1. And next question that is most PYQ that widely spread is of course GLUT1. Then we have GLUT4. It is insulin dependent, not independent. So it is depending on the fasting and fed state. And it is mainly, इस पे majority of the PYQs होता है like it is present in skeleton, heart, muscles and adipose tissue. And it is mainly insulin mediated glucose uptake. मतलब इसका GLUT4 का काम mostly insulin पे ही depend करता है. Now we will talk about GLUT5. It is present in small intestine, testes, sperms and kidney. But it is mainly have two main functions, like it is present in testes and ovaries. In testes, it has a function to transport fructose to the sperm. So we have a fructose transporter, but it has poor ability to transport glucose over there. So then we have GLUT7. It is present in the liver endoplasmic reticulum. इस पे PYQ नहीं है, but we are expecting कि इस पे question आ सकता है. So just mark this up. Then we have GLUT9, in which we have urate transporter. It is also a PYQ. Then we have GLUT11. It is a fructose transporter to heart and skeleton muscle. So let's revise all the PYQs. Widely spread क्या है अपना? We have GLUT1. That इसको RBC पूछा तो आपको GLUT1 बोलना है. GLUT2 के बारे में याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियास. ठीक है. GLUT3 के बारे में मेन याद रखना है कि ब्रेन में मेजोरिटी में क्या प्रेजेंट है. अगर क्वेश्चन में आया तो GLUT3 बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी इन द ब्रेन सेल्स. देन GLUT4 के बारे में हमें याद रखना है, इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट. तो इसको डिपेंड करता है आपकी फास्टिंग और फैट स्टेट पे. इट इज़ मेजोरिटी प्रेजेंट इन द स्केलेटन मसल, हार्ट and adipose tissue and muscles. And about the GLUT5, we have to remember it is present in testes in males and ovaries in female, and it mainly transports the fructose. GLUT7 के बारे में हमें कुछ खास याद नहीं रखना, but we are expecting the question, so we will remember that it is present in liver endoplasmic reticulum, from which we have glucose from endoplasmic retinol to cytoplasm. GLUT9 के बारे में हमें याद रखना, it is present in neurotransporter. 11 we have like fructose transporter to heart and skeleton muscle. Let's solve some question. Widely spread is GLUT1. Brain में we have majority GLUT3 over GLUT1. So next question, which glucose will be affected in fasting state? So take 2-3 seconds and think. Most of you are will be thinking it will be GLUT2. See guys, it is GLUT4 is इंसुलिन डिपेंडेंट और हमारा फास्टिंग या फिर फैट स्टेट डिपेंड करता है इंसुलिन की स्पाइक. सो ग्लूकोज विल इफेक्ट इन फास्टिंग स्टेट, दैट इज GLUT4 नॉट 2. इंसुलिन डिपेंडेंट इज अगेन GLUT4. So now let's talk about the SGLT. We have two type of SGLT transports, like 1 and 2. 1 is mainly present in the intestine and 2 in the nephrons, in the kidneys. So we will first talk about the SGLT1. It is present in intestine. So first of all, see, this is the cross section of. So first see guys, this is the cross section of the intestine. So there we have the luminant side. Here we have the basolateral side. So see, on this luminant side we have this SGLT1, and over the basolateral side we have the GLUT2.
सो SGLT का काम क्या है, आपका ग्लूकोज आया इंटेस्टाइन, आपने डाइट में ग्लूकोज इंटेक किया, स्टमक ईसोफेगस स्टमक होता है वो इंटेस्टाइन में गया, सो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का अपटेक SGLT1 लेगा और उसको बेजोलेटरल साइड में भेजेगा. फ्रॉम दिस लुमिनेंस साइड इट विल सेंड इट टू बेजोलेटरल साइड. मतलब कि यहाँ पे अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा इट टू द बेजोलेटरल साइड. बेजोलेटरल साइड पे हमारे पास ग्लूट 2 है जो उसको इस साइड से ब्लड वेसल तक एब्जॉर्ब करवाएगा. सो बट दिस टेक विद द हेल्प ऑफ सोडियम. सो दिस इज हाउ SGLT1 works. Then we all know that SGLT2 is present on the nephrons. Glucose is being absorbed by the blood through SGLT2 and sent to the blood. But if in diabetic we have so much of the glucose that we don't want to absorb it more, so we will block this pathway with SGLT2 inhibitor. And like example gliflozin. बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑफकोर्स ग्लूकोज विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन and urine will be having more amount of glucose, because of which we will high chance of UTI. So there are all the questions. You can take screenshot if you want, and if you want more such videos, please subscribe to my channel and like this video, and do mention me in chat that you like or not.